वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम आपको यूनिट 5 का एक टॉपिक बताएंगे और वो टॉपिक होगा एम्बॉडीड एनर्जी एनालिसिस ऑफ अ प्री कॉस्ट बिल्डिंग सिस्टम। Before to discuss these points, I want to revise our previous contents. Those were related to the green building technology. And what is the green building technology? You are already aware. If we are talking about the green building technology, definitely this means that we are talking about such type of system which would be completely subjected towards subjected toward for making equilibrium in between human being as well as environment. That means eco-friendly system should be there. So uh, in the same way, suppose that if any type of building is to be installed, and for to install that type of buildings, if we are interested that we have to save energy, if we have to save money, definitely we will have to think about a green building or such type of building, which in which the energy sources are very confined, and if any type of energy consuming devices would be run, and during the function energy consumption should be very controlled, should be very low. सपोज दैट अगर कोई ऐसी डिवाइसेस घर में यूज़ हो रहा है जो एनर्जी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस हिसाब से कि ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, तो एनर्जी यूज़ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एनर्जी सेविंग नहीं होगी। एनर्जी सेविंग नहीं होगी तो वहाँ मनी सेविंग की प्रॉब्लम आएगी। तो ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का जो मेन मोटिव होता है वो एक ऐसा बिल्डिंग डेवलप करना जिसमें कि छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जिसकी अवेलेबिलिटी जो है ईजिली होती है और वो रिन्यू होते हैं, रिसाइकल होते हैं। तो डिमांड पे उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। तो सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी इक्विप्ड डिवाइस की बात करें तो हम सोलर पैनल वगैरह अगर यूज़ करें एक सेट पैरामीटर्स को सेट पैरामीटर्स की जो डिमांड का है उसको फुलफिल करने के लिए, तो सोलर पैनल्स का कितने वाट का कंजम्पशन है, कितना एरिया है हमारे पास अवेलेबल है, तो उस हिसाब से वहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे उसको। देन एक एनर्जी एनालिसिस या प्री कॉस्ट बिल्डिंग सिस्टम का, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग सिस्टम है और उसका प्री कॉस्ट एनालिसिस करना है या फोरकास्ट करना है कि अगर ये चीज़ें ऐसे हो तो फर्दर फ्यूचर में उसका कॉस्ट क्या है। सो उसके लिए एक एनर्जी एनालिसिस होती है, उसे मोरिट एनर्जी एनालिसिस भी बोलते हैं, जो प्री कॉस्ट बिल्डिंग को सिस्टम को डिफाइन करता है। ओके, सपोज दैट अगर कोई सर्टिफिकेशन चाहिए हो ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसके लिए कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि फर्दर पहले भी डिस्कस हो चुका है। और वो पॉइंट्स, उसमें ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसमें कि जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस होती हैं, अगर वो प्रोड्यूस होंगे थोड़े भी तो वो पॉइंट्स कट हो जाएंगे। सो हमारा सिस्टम ऐसा हो कि जो कोई भी गैस का एमिशन ना हो जो कि ग्लोबल वार्मिंग गैसेस के लिए क्या होगी, वो रिस्पॉन्सिबल हो। सो हमको एक ऐसा डिवाइस, ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जो कि फुली ग्रीन हो। ग्रीन होने का मतलब तो रिन्यूएबल होना होता ही है कि सारे रिसोर्सेज रिन्यूएबल हो, लेकिन साथ ही साथ वो सारे रिसोर्सेज क्या भी हो, प्लैनेट्स को अदर सारे आपके सराउंडिंग्स को कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना डाले, इसका मतलब इको फ्रेंडली हो, तो वो भी ज़रूरी है। तो अब कोई बिल्डिंग सिस्टम बनाना है, उसमें उसकी एनर्जी एनालिसिस करनी है या प्री कास्ट बिल्डिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो आज के लेक्चर में एनालिसिस है वो एम्बॉडीड एनर्जी एनालिसिस है।
उसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। Now, यहाँ कंटेंट्स देख सकते हो, नॉट विजिबल आई थिंक। I think this should be visible. Now content is equal. Okay. Proceed forward. There are some following points. First point is background. The next point is life cycle analysis. Next, embodied energy of building components. Then methodology proposed, the way to establish an analysis for energy. And next one is energy consumption and production of building materials. Now the next is energy in transportation of building materials. Next point is energy and construction stage of the building. Next result of embodied energy analysis. Finally, we will reach for the point the conclusion. Here you can see this in the slides a background. The background is over here for the energy analysis for pre-building cost. There are some following points. If we see that the buildings having the various type of components in which the various type of systems, various type of devices, various type of appliances will be there, and definitely they will consume some amount of energy. So buildings consume more than 40% of global energy and contributes about 33% of greenhouse gases emission. It means so green building जो बिल्डिंग है वो 40% टोटल ग्लोबल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और 33% ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं। तो अगर आपको बात ये समझ में आ रही होगी कि 33% ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है ग्रीन बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग से ही, तो इसको रिड्यूस करना हमारा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए। तो वो कैसे होगा जब हम चीज़ों को ऐसे रखेंगे या ऐसे उसको डिज़ाइन करेंगे या समय समय पर जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उस बिहाफ पर अगर हम सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे जो कि कम से कम इको फ्रेंडली हो, तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन 33% से कम हो सकता है। और यूरोपियन बिल्डिंग सेक्टर की बात करें तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 63%। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यूरोपियन बिल्डिंग सेक्टर की बात करें तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 63% जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जबकि CO2 एमिशन की बात करें तो 77%, 2013 के हिसाब से 77% जो है ये CO2 एमिशन जो है वो यूरोप में वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ही रिस्पॉन्सिबल है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आर द 1/3 ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन श्रीलंका। 93 and the next point is over here, and that is 92% of occupied housing units of the country are collectively single storied or two storied. 58% of the house are constructed with brick walls and 33.8% are constructed with blocks. Here clay, sand, materials, clay, sand, material, cement, steel. Okay. So these are the raw materials to build any type of building. The depletion of resources, environment restriction, cost of labors, and when these three points would be combined in each other, then definitely a new uh, points comes as find alternative building systems. The precast concrete products. If we talk about the precast concrete products, then it have become a natural choice of achieving sustainability in buildings. Therefore, they incorporate holistic design, efficient use of materials, and minimize construction waste and child disturbance. ठीक है?
तो प्री कास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट्स जो है ये नेचुरल चॉइस ऑफ अचीविंग सस्टेनेबिलिटी है, जिसमें कि इसमें वेस्टेज नहीं होते हैं। और द मेन क्वेश्चन इज देयर, what is the level of sustainability can be achieved with precast concrete? I think this is a very question. This should be arising in your mind. Yes. If we talk about the life cycle analysis, now you can see the cycle is over here. The materials, transport, assembly, use, maintenance, disposal. In this way, life cycle analysis takes place. Suppose that the materials will, which type of materials will be used in the buildings, that those materials will be responsible for the strength of building. Transport, the materials will be unloading as well as loading, assemble, because the architecture, on the behalf of architecture, the various type of components will be assembled in each other. Then the use of building, maybe either for residential or commercial purpose. And here the maintenance section is over here, and here the disposal section is over here. In this way, the life cycle analysis takes place. Uh, is an established method used to quantitatively evaluate the environmental impact of products. ISO 14040 2006, जो 14040 2006 जो ISO का स्टैंडर्ड है, वो फुली फैक्ट्स के बारे में दिया हुआ है कि ये चीज़ें स्टैंडर्ड है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। ये लाइफ साइकिल असेसमेंट और प्रिंसिपल एंड फ्रेमवर्क, इसमें सारे एनवायरमेंटल से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं वो सारे दिए हुए हैं। और जब वो सारे पॉइंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी सेक्टर अगर फॉलो कर ले जाता है, तो हम ISO 14040 2006 की सर्टिफिकेशन उसको मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिल्डिंग अगर ISO सर्टिफाइड है 40,000, इट मीन्स कि वहाँ पे एनवायरमेंटल आस्पेक्ट जो है, जो भी पॉइंट्स हम सारे के सारे वो फुलफिल कर रहा है। Now, the system boundary for LCA of a building. Now here you can see embodied energy analysis, raw materials and equipment with ICE database and work measurements in the material, construction, transportation, operation and maintenance, then demolition. सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की बात आती है, फिर रॉ मटेरियल्स के बाद जो है उस मटेरियल्स का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, और ये रॉ मटेरियल्स का क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात आती है। इस तरीके से इस साइकिल में सिस्टम बाउंड्री डिफाइन की जाती है किसी भी एम्बेडेड एनर्जी एनालिसिस के लिए। द थिंग इज दैट ये एनर्जी एम्बेडेड एनर्जी एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। I think before we discuss these points, definitely it is makes you that you know the concept of the LEED as well as green building technology concept. And if you have studied those topics, then definitely you can understand the significance of embodied energy of building components as well as this type of analysis. So I think we should proceed forward, and you are getting, if there any doubt, any type of doubt is arising in your mind, then just put in the comment box. I will definitely answer for these questions. So what is the embodied energy of building components? Embodied energy is the energy consumed by all the processes associated with the production of product, from the mining and processing of natural resources to manufacturing, transport as well as product delivery. तो embodied energy जो है वो सारा का सारा जितना एनर्जी कंज्यूम किया गया है सारे प्रोसेस के थ्रू, वो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि बिल्डिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स माइनिंग जब हो रही है उसकी, वहाँ से लेके प्रोडक्ट की डिलीवरी तक जितने एनर्जी कंजप्शन हो रहा है वहाँ तक,
सवाल बहुत बेसिक से और बहुत लास्ट तक का है। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस आ जाते हैं? माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज प्रोडक्ट डिलीवरी। Now, this embodied energy analysis depends on the system boundary of the analysis. System boundary of analysis is very important, क्योंकि सिस्टम बाउंड्री जितना ऑफ एनालिसिस जितना होगा, जितना उसको कंफाइन किया जाएगा, उस पर ये एनर्जी एनालिसिस डिपेंड करती है। देन जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्टडी, then transport distance and methods, then technology of the manufacturing process, then method of embodied energy analysis. ठीक, तो मेथड ऑफ एम्बोडिड एनालिसिस कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कोई भी एम्बोडिड एनर्जी एनालिसिस। टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी कैसा यूज़ करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, उस पर भी एनर्जी एम्बोडिड एनर्जी एनालिसिस डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस और मेथड्स। The three methods of analysis is given. First one is process-based analysis. Second one is input-output analysis, that is economic IO analysis, and last one is hybrid analysis. Details of precast building system. अगर डिटेल्स ऑफ प्रीकास्ट बिल्डिंग सिस्टम में सबसे पहले हम बात करें तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे। प्रीकास्ट प्री स्ट्रेस बीम की अगर हम बात करें, per column 150 cross 350 as well as 200 to 200 foundation aims to isolated pad footings with precast pre-stressed tie beams. Floors, ground floor 50 mm scared and first floor with precast pre-stressed slab. Final thickness is given over here, that is 65 cross 1 cross 4. 65 is in mm, so if you will convert this value to meter, then this will be 0.065 into 1 into 4. It's the wall, both interior and exterior walls out of EPS panels that should be of the range that is 100 cross 600 to cross 2400. Now if you talk about the scope of study, I think this is very clear to you all. Now I will talk to you about the scope of study. It is the embodied energy analysis for precast building. Now here, if you talk about the scope of study, then a house with identical architectural house plan built at the same location is assumed for the two building system, that is EET is equal to EP plus ET plus EC. So EET क्या है? Total embodied energy. EP क्या है? Energy consumption at production of building materials. और ET क्या है? Energy in transportation of building materials. और EC क्या है? Energy at construction stage of the buildings. So if any type of questions is arising in your examination, that the question would be related to the scope of energy analysis, and for that type of questions you will have to give this formula, and this formula is given over here, that is double ET is equal to EP plus ET plus EC, where double ET is total embodied energy, EP is energy consumption at production of building materials, ET is energy in transportation of building materials, and EC is energy at construction stage of the buildings. Now if we talk about the methodology, तो methodology में सबसे पहले जो है ऑपरेशन करेंगे इन्वेंटरी मटेरियल्स के लिए। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी।
Now, if we talk about the methodology proposed in energy analysis, then first point is for the methodology, that is the preparation of inventory of material used using BOQ of the buildings. Second point is calculation for the embodied energy of these materials. Three data sources were used: Sri Lankan data, Indian data, inventory of carbon and energy, IC based database prepared by the University of Bath. Embodied energy of electrical work and wiring of the house has been eliminated. Third one is conduct work studies and interviews. Convert electricity uses, fuel consumption at each activity in energy figures. After that, the fifth point is related to the calculation of total embodied energy for the building. Now the case study is over here. So we will talk about the case study. Two-story residential building. Location of the site is Kandani. Floor area is 325 square meters. And the five-bedroom house. Initial construction is concrete formed structure with masonry walls, concrete bricks, foundation with bad bricks combined them. Energy consumption at production of buildings materials. BOQ of conventional institute houses obtain the amount of building materials, material quantity, etc. Now, if you talk about the energy and transportation of the buildings, then it occurs at different stage of manufacturing of products, as well as the fuel consumption data and the transportation distances or waiting idle times at different activities. With those machinery related to this building construction were studied. Now the data for the transportation distances. Suppose the materials are over here: the cement, sand, aggregate, steel, EPS, fly ash, bricks, plywood, wood. Transportation distance are given in kilometers for these tables. The two construction site, two ready mix plant, two pre-cast yard. For the cement, 200 kilometer is over here. For the cement, two ready mix plant, 200 kilometers is over here. And for the cement, to pre-cast yard is 180 kilometer is given over here. As well as for the sand, 100 kilometer is over here. I think for each section the 100 kilometer is over here, and that this value is same. The 50 kilometer is for the aggregate, and the 30 is 50 for the steel, and 200 as well as 200 kilometer for to ready mix plant as well as to precast yard. There is 200 kilometer for the fly ash, the bricks, plywood, and wood. 40, 130, and 100 for the construction site are given over here. So all the data are related to the transportation distance for the different type of materials, and for the construction site, ready mix plant as well as precast yard. Now एनर्जी एट कंस्ट्रक्शन स्टेज ऑफ द बिल्डिंग्स, अगर हम ईसी की बात करें, एनर्जी एट कंस्ट्रक्शन स्टेज ऑफ द बिल्डिंग्स दैट इज ईसी. Energy uses at construction stage is minimal. That is, most of the work is labor intensive and machinery usage is minimized. एनर्जी यूजेज एट कंस्ट्रक्शन को अगर मिनिमम करना है तो जो वर्क है लेबर के इंटेंसिव और मशीनरी यूज़ को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा. एंड फ्रिक्वेंटली यूज मशीनरी अगर हम बात करें तो कंक्रीट मिक्सचर, ग्राइंडर, बार कटर्स एज वेल एज आर्क वेल्डिंग के लिए. और रिकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन फॉर मशीनरी यूज एंड द वेटेज ऑफ द पावर कंजम्पशन, ये सारे के सारे चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी इसी के लिए. The next one is the work measurement. Several site visits were arranged to the casting yard, Dikala, and some construction sites. As well as work studies were done to quantify the labor, machinery, and energy environment of different construction stages. And collected data. The collection of data is to be there. Result of work measurements and vehicle efficiency is some photos from the site is over here. Now, if the calculation are done, then
pie chart is over here. After the accomplishment of this analysis, the pie chart is over here. The result of embodied energy analysis for conventional stew building. Result of embodied energy यहाँ पे देख सकते हो और अलग अलग कलर से दिया हुआ है. तो 11.22%, 7.2%, 7%, 18.7%, 6.37%, इस तरीके का परसेंटेज दिया हुआ है. इसके परसेंटेज जो है टोटल कंक्रीट, टोटल फ्रेमवर्क आइटम्स, टोटल रेंट, री इन्फोर्समेंट, फिनिशेज विद सेरामिक टाइल्स, ये सारे के सारे कैटेगरी दिए जिसके लिए परसेंटेज दिया यहाँ पे एनर्जी का. So what we get the conclusion from the energy analysis. In this analysis, we got a comparative analysis of embodied energy of a conventional building system and pre-cost building system using process-based analysis was done. Energy consumption at production, transportation, and construction stages were considered. Total embodied energy of pre-cost building system is 19% less than the conventional building system. कन्वेंशनल में ज़्यादा होता है, ठीक है. that is 3.8 gigajoule per meter square. Further studies on the production process of EPS wall panels and construction stage, the energy use of the building help to improve the accuracy of projects. और स्टडी की जाए तो इसमें हमको क्या मिलेगा, इम्प्रूवमेंट मिलेगा काफ़ी, और जो एनालिसिस होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी. तो उसके लिए क्या करना पड़ेंगे, हमको केस स्टडी और करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सारे चार्ट्स यहाँ पे क्लियर हुए. ये वाला जो सेगमेंट है ये प्री कास्ट कंक्रीट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कितना 45.62%. ये क्या है, टोटल री इन्फोर्समेंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 7.24%. ये फ्लोर फिनिशेज में सिरेमिक टाइल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 18.77%. ये रिजल्ट ऑफ embodied एनर्जी एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग के लिए, ठीक है. और ये रिजल्ट ऑफ embodied एनर्जी एनालिसिस है फॉर कन्वेंशनल इंस्टू बिल्डिंग के लिए. From here you can see the difference in between these two sections for institute building as well as for buildings. So I think this should be very clear. Okay. एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था, हाँ ये वाली चीज़. अगर रिजल्ट ऑफ embodied एनर्जी एनालिसिस की हम बात करें, embodied एनर्जी कैलकुलेशन फॉर द इंस्टू एनर्जी, embodied एनर्जी कैलकुलेशन फॉर द प्री कॉस्ट कंक्रीट के लिए ये सारी वैल्यूज दी हुई है. गीगा जूल में, ये भी गीगा जूल में दिया गया है. फिर इसको कैलकुलेट जब करोगे अलग अलग, तो ये सारी वैल्यू लगभग यही आएगी, 3.06 आ जाएगी इसके लिए बिल्डिंग के लिए. कन्वेंशनल बिल्डिंग इंस्टू के लिए 3.8 आ जाएगा. 3.8 जो है 90% ज़्यादा है इससे. तो कन्वेंशनल में कुल मिला के embodied एनर्जी जो है वो ज़्यादा आएगा. I think the full thing should be clear. एनर्जी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं जो फाइनली हमको कैलकुलेशंस के लिए देते हैं वैल्यूज़. So if any type of query is arising in your mind, just put in the comment box. और इससे पहले कि ये सारी चीज़ें जैसे पढ़ रहा था, इससे पहले ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, उसमें LED जो हम आपको LEED सर्टिफिकेशन का जो बताए थे, वो सारे के सारे कुछ मेन पॉइंट्स उस पर देख लेना और उसको इस चीज़ से रिलेट करना. और जो एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं, एनालिसिस में लास्ट में जो तुम्हारा पाई चार्ट का डायग्राम है, that diagram is very important. So that diagram should be always in your mind for a long period of time. If there any type of question will be asked in the examination, then just put that diagram.
and definitely you will get the good marks. I think the 60 to 70% marks at least. So okay, thank you. So next section